Hi everyone, I hope I'm live. You can see me. Hi Nilesh, how are you? Hi Uma. Hi Mamta, how are you? Hi Sushi, good evening. Yes, I'm also good. Amazing. Nilesh, can you please share the link with other people so that they can join? और हम अपना next chapter read करना start करें. The evidence eating. सो आज वाला चैप्टर बहुत बड़ा है. यस. So first of all, before starting the session, let's be present, let's connect with ourselves, because there are lots of people जो सुबह से इधर उधर काम कर रहे हैं, दिमाग इधर उधर चल रहा है. So let's be present right now, right here in this moment. Thank you so much. Yes, do let me know. The voice is clear. So let's start quickly. Thank you to those who जिन लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू. जिनको नहीं लग रही उनको भी थैंक यू. आई एम सो ग्रेटफुल. इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, नॉट माइन. आई नो हु आई एम. So it's all about your perception, it's all about your mind, so let it be. So close your eyes everyone.
For this moment, just relax your body. Don't think about past, don't think about future, that what will happen in future. Just don't think about anything, just be in this moment, just allow the life to flow, and just flow with the life. Actually, life is flowing, but we are not flowing with the life. We are stuck in the past and we have anxiety for the future. But for this moment, just let go of every single worry, every single anxiety. That if you want to manifest this thing, you want to manifest that thing, this is your desire, that's not your desire, just let it be. Because this is the only moment that is present. So क्यों ना इसको खुल के जिया जाए, इस मोमेंट को. And with this, start breathing. Take a deep breath. Just relax your shoulders. Life is flowing too fast. So let's connect with the life and let's speed up our growth. And everyone wants to be successful, and everyone have the fear of failure. So let's choose peace, not success, not failure, just peace. Because this is what we really need in our life. So for a moment, choose peace. Just relax your body. And allow your body to heal itself. And with this, start rubbing your hands. Place it on your eyes and open your eyes with a very beautiful smile on your face. So आज बहुत ही small सी meditation हुई है, but during the meditation I got the insight, so we'll share super soon. Yes, welcome. Yes. So you are ready? Everyone just type in the chat that we are ready to learn, we are ready to upgrade, and we are flowing with the life. Just type in the chat box so that I can get an idea. Yes.
And I'm getting lots of questions from so many students that मैम आप अपना नया कोर्स कब लेकर आओगे, या क्या कहते हैं, that I want to heal my family, I want to heal my children, I want to heal my husband and all. Please, please, please choose yourself. Don't choose others to मतलब अगर आपको हील करना है तो फर्स्ट चूज योर सेल्फ. सेल्फ लव इज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. जब आप खुद को चूज करोगे, खुद को हील करोगे, ओनली देन यू विल एबल टू help other people. But if you are not healing, if you are just focusing and you have the strong intention while coming to my session that मुझे लोगों को change करना है और क्या कहते हैं, अपने फैमिली को चेंज करना है, मुझे अपने बच्चों को चेंज करना है, मुझे अपने हस्बैंड को चेंज करना है, दैट्स द ओनली रीज़न आई एम टेकिंग द सेशन. दैट्स द ओनली रीज़न मुझे अपने बहुत लड़कियों के मैसेज आते हैं कि उनको अपने पार्टनर को चेंज करना, अपने बॉयफ्रेंड को चेंज करना है, गर्लफ्रेंड को चेंज करना. प्लीज़ चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, because you cannot change anyone else unless that person is ready. Just accept the fact and start working on yourself. But if you change yourself, आपकी वाइब्रेशन उस पर्सन तक पहुंचेगी, आपकी वाइब्रेशन उस पर्सन तक जाएंगी, तो वो अपने आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देंगे. इसीलिए just work on yourself and have strong intention that I want to change myself. There is something inside of me that I need to heal, that I need to work. And हर किसी को वर्क करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि कोई इसमें स्पेशल पर्सन आते हैं या कैसा कैसा रहता है. हर कोई पर्सन, जितने भी इस प्लेनेट अर्थ में, इवन कि हमारी मदर अर्थ हैं जो, वो भी खुद हील होती हैं. सो हीलिंग इज़ लाइफ का पार्ट है, लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है. सो इसको एक्सेप्ट करो, बट हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कि आप खुद के लिए कर रहे हो, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप खुद के लिए खुद इम्पॉर्टेंट हो. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. ये चैप्टर था, हमने लास्ट चैप्टर किया था व्हाट एक्सेप्शंस, राइट. उसमें बताया गया था कि डॉक्टर ह्यूलन ने बताया कि उनकी क्या क्या उनके अकॉर्डिंग होपोनोपोनो कैसे करनी है, या उनकी जो मोरा थी, उनकी मेंटोर, वो कैसे कैसे करती थी. हाँ मेरी तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है. यस, अगर आपको मेरी तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे. सिंपल एज दैट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. और बस दिस इज़ व्हाट आई कैन से. सो नेक्स्ट चैप्टर है इसी बुक का, वो चैप्टर है आई लव यू, दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ लव. सो you cannot be denied anything that is perfect, whole, complete and right for you when you are yourself first. Wow. Being yourself first, you automatically experience perfection in the way of divine thoughts, words, deeds and action. Allowing your toxic thoughts to be first, you automatically experience imperfection in the way of disease, confusion, resentment, depression, judgment and poverty. So ये चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फर्स्ट हमें खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद को होल करना है, खुद को परफेक्ट करना है. सो ओके, हाय, थैंक यू सो मच. आपका 5th लाइक था, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल. सो लेट्स फोकस ऑन दिस. अभी मैं कोई चैट नहीं पढ़ूंगी, अभी मैं डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर ध्यान रखूंगी, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ लॉन्ग और ये थोड़ा टाइम लेगा. सो इसी वजह से. सो आई ऑब्जर्व्ड डॉक्टर ह्यूलिन्स मैसेज एज बेस्ट आई कुड, बट देयर वॉज सो मच मोर आई वॉन्टेड एंड नीडेड टू लर्न. And I have always been good at being a sponge and getting the ideas by just allowing myself to be open to them. As I sat in this first event, I began to feel that my sole job in life is to say I love you to anything that come my way, whether I saw it good or bad. Therefore, I could dissolve the limiting programs I saw or felt, and the more I could achieve the state of zero limit and bring peace to the planet through me. So, Mark had a little more trouble grasping the message of the seminar. He kept wanting to put it into the logical framework. It was becoming clear to me that mind does not have any idea what is going on. So, trying to find a logical explanation was itself a recipe for failure. So, हम क्या करते हैं
हमने देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, मोस्टली इंटायर प्लानट अर्थ इज़ वर्किंग थ्रू द माइंड। मतलब वो हर चीज़ अपने माइंड के थ्रू ही, पास्ट की मेमोरीज के थ्रू या अपने फ्यूचर की एंग्जाइटी के थ्रू ही हम अपने प्रेजेंट जी रहे हैं, उसके ऊपर ही हम डिसीजंस ले रहे हैं। सो इसीलिए जस्ट स्टार्ट, क्या कहते हैं, स्टार्ट स्टार्ट बिकमिंग इलॉजिकल, राइट। हमें हर चीज़ का लॉजिक पता हो, हर चीज़ का ऐसे प्लस माइनस पता, ये तो हमारा माइंड है वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। मतलब अगर हम अपने हर चीज़ माइंड के थ्रू देखेंगे, बट अगर हम एक ओपन रहेंगे, रिसेप्टिव रहेंगे फॉर द डिवाइन इंटेलिजेंस, फॉर द डिवाइन आइडियाज़, तो वो फ्लो होने लगेंगे। और जब हम ओपन एंड रिसेप्टिव कब रह पाएंगे, जब हम क्लीन होंगे, जब हमने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करी होगी, जब हमने होपोनोपोनो किया होगा परफेक्टली, तो हम जीरो स्टेट पे आ जाएंगे। तो डिवाइन आइडियाज़ जो जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकते हैं, जो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो वो अपने आप आने लग जाएंगे। सो डॉक्टर ह्यूलिन repeatedly stressed that there are 15 bits available to the conscious mind, but 15 million bits happening in any one moment. We don't have chance to understanding the all the events at play in our life. We must let go, we must trust. I admit that much of this was sounding insane. At one point in the event, a gentleman said he saw a portal open in a wall and dead people flow through it. Do you know why you are seeing that? Dr. Hewlin asked. Because we have talked about spirit earlier, someone said. Exactly. Dr. Hewlin acknowledged you attracted them by talking about them, and you don't want to look into the other world. You have enough to do to stay in this moment, in this world. So I did not see any spooks. I did not know what to make of those who did. I liked the movie The Sixth Sense, but as a movie, I did not want spirits showing up and talking to me. Apparently, this is normal for Dr. Hewlin. However, he told the story of working at a mental hospital and hearing toilets flush at midnight all by themselves. The place was filled with spirits, and he said many patients died in the ward in previous year but did not know they were dead. They were still there. Still, they were using the washroom, and apparently so. But if that were not odd enough, Dr. Hewlin went on explain that if you ever talk to someone and notice their eyes are almost all white with the cloudy film around the edges, they are possessed. Simple as that. मतलब बट इसको मैं थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, और अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी आइज़ में आप देखने की कोशिश करो कि उनकी आइज़ के आसपास जो है वो बहुत क्लाउडी है, लाइक जो वाइट है, वाइट एजेस है, वो बहुत क्लाउडी दिख रही है, दैट सिंपल मीन्स दैट पर्सन इज पोजेस्ड बाय समथिंग, right? Something negative, we can say, not negatives, by some spirit. So don't even try to talk to them, he advised. Instead, just clean yourself and hope your clearing will remove the darkness taking them over. I am pretty open-minded guy, but this talk of spirit and possessed soul and ghost who used the toilet at night was bit much for even me. Still, I hung in there. I wanted to know the ultimate secret to healing so I could help myself and others to wealth, health, and happiness. I just never expected I would have to walk through the invisible world and enter the twilight zone to get there. And at another point in the event, we were lying on the floor doing exercise to open the energies in our bodies. Dr. Hewlin called me to him. When I look at this person, I all see a starvation in Sri Lanka, he told me. I look at her, but I only saw a woman stretching on a carpet, and we have so much to clean, Dr. Hewlin said. Despite my confusion, I did my best to practice what I understood. The easiest thing to do was simply say I love you all the time. So I did. When I went to the washroom one evening, I felt beginning the urinary infection, and I said I love you to the divine while sensing the infection. I soon forget about it, and by morning it was gone. I continued to say I love you mentally, repeatedly, no matter what was happening, whether it is good, whether it is bad, whether it is different. I was trying to do my best to clean anything in the moment, whether I was aware of it or not. Let me give you a quick example how this worked. One day, someone sent an email that upset me.
In the past, I would handle it by working on my emotional hot buttons or by trying to reason with the person who sent the nasty messages. This time, I decided to try Dr. Hewlin method. I kept silently saying that I am sorry and I love you. I did not say it to anyone in particular, but I was simply evoking the spirit of love to heal within me, what was creating and attracting the outer circumstances. Within an hour, I got another mail from a same person. He apologized for his previous message, and keep in mind, I did not take any outward action to get that apology. I did not even write him back, yet by saying I love you, I somehow healed within me the limiting hidden program that we were both participating in. So इसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि उन्होंने स्पिरिट्स एंड ऑल उसके बारे में बताया है, राइट, कि अगर हम खुद को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम खुद को क्लीन करते हैं तो हम ये सब चीज़ों से साइड पे रहते हैं. सेकेंड थिंग इज़, फिर डॉक्टर जोविटेल ने ही सेड कि उन्होंने ये टेक्निक कर ली थी दैट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. वो हमेशा हर चीज़ को यही बोलते रहते थे, मेंटली अपने रिपीट करते रहते थे. एंड जैसे जैसे, क्योंकि लव की एक एनर्जी होती है जो कि हील करती है पर्सन को, या जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हील करती है. सो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि किसी ने उनको ईमेल किया था जिसमें बहुत उसमें बोल रखा था, लाइक बहुत नेगेटिव बोल रखा था उनके बारे में. तो उन्होंने कोई और टेक्निक यूज़ नहीं करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कि नहीं नहीं आई एम परफेक्ट, दैट पर्सन इज दिस, ये वो, नथिंग, कुछ भी यूज़ नहीं करा. उन्होंने डॉक्टर ह्यूलिन की टेक्निक यूज़ करी दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी. सम हाउ वी आर शेयरिंग द मेमोरीज, जो पास की हमारी मेमोरीज हैं वो हम शेयर कर रहे हैं. सो इसी वजह से ही ये हमारे मेरे सामने आ रहा है. एंड ही क्लीन्ड हिमसेल्फ एंड विद इन एन आवर उसको फिर मेल आई वही सेम पर्सन से जिसने अपोलोजाइज करा कि आई एम सॉरी दैट मैंने ये सब बोला. और यही मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करा इस पूरे पैराग्राफ में. सो डूइंग दिस प्रोसेस डज नॉट ऑलवेज मीन इंस्टेंट रिजल्ट. मतलब अगर आप ये प्रोसेस करें इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट ही मिलेंगे. द आइडिया इज नॉट टू अचीव रिजल्ट बट टू अचीव पीस. सो होपोनोपोनो करने का मतलब ये नहीं है कि हमें रिजल्ट्स को अचीव करना है. होपोनोपोनो का मतलब है वी हैव टू अचीव द पीस इन दिस मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फीलिंग सो डिस्टर्ब, समवन इज पोकिंग यू, समवन इज क्या कहते हैं, समवन इज ट्रीटिंग यू बैड, एंड बट इन रियलिटी आप उनको रिएक्ट करने की जगह के ऊपर, आप उनके ऊपर बोलने की जगह के ऊपर, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप अपने अंदर क्लीन कर रहे हो, अपने अंदर अपनी इस सिचुएशन के साथ एक पीस में आ रहे हो. जब आप आपके अंदर वो पीस वाली वाइब्रेशन होगी तो वट यू विल अट्रैक्ट, ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट पीस ओनली. सो the idea is not to achieve a result but to achieve peace. When you do that, you often get the result you wanted in the first place. और कहते हैं कि जब हमारा सॉरी 2 मिनट जस्ट, ठीक है. सो इसमें आइडिया ये है कि जब हम अपने क्या कहते हैं अपने आप को हील कर लेते हैं, और क्या कहते हैं मतलब जब हम अपनी सिचुएशन के साथ पीस में आ जाते, चाहे वो जैसी भी सिचुएशन है, जब हम अपने आप को क्लीन कर लेते तो हमारे अंदर एक पीस आ जाती, राइट. जब हम उस सिचुएशन के साथ पीस में आ जाते तो साथ के साथ वो मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में आ जाती, लाइक वो हमारे सामने मैनिफेस्ट हो जाती है, जो हम जिसको हम बहुत फोर्सफुली कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए चाहिए, इसी मोमेंट पे चाहिए. सो समटाइम्स हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर नॉट रेडी टू लेट गो, हु आर नॉट रेडी टू सरेंडर. जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन दैट देयर इज सम हाईएस्ट पावर जो आपके लिए वर्क कर रही है. एंड देन सेकेंड इज कि एक डिवाइन है जो आपको हेल्प कर रहा है. सो इसीलिए कभी भी इतना मतलब अपने आप को उस मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए, डिज़ायर के लिए इतना भी अपने आप को फोर्स मत करो, बिकॉज आप लैक वाली वाइब्रेशन में जा रहे हो. और जब आप लैक वाली वाइब्रेशन में हो तो वट यू विल अट्रैक्ट लैक ओनली. सो ट्राई टू मेक द पीस वेयर यू आर इन दिस मोमेंट. जस्ट do the Ho'oponopono and make the peace. Things will turn for sure. So for example, one day one of my employee disappeared on me. He was supposed to get some work done on an important project with an urgent deadline. Not only did he not finish, but he seemed to vanish from the planet. And I did not take this very well, though by then I knew about Dr. Hewlin method. I found it hard to say I love you when all I wanted to say I want to kill you. Whenever I thought of my employee, I felt rage. Still, I kept saying, I love you, please forgive me, and I'm sorry. I was not saying it to anyone. I was saying it to say it.
I certainly did not feel love. In truth, it took me 3 days of doing this process before I got anywhere near of the point of peace within myself. For then and that's when my employee surfaced. He was in prison and he called to ask for help. I gave it and I continued to practice I love you as I dealt with him. While I did not see instant result, my finding inner peace was enough to result to make me happy. And somehow at that point my employee felt it too. That's when he asked the jailer to use the phone and he called me. Once I had him on phone, I was able to get the answer I needed to complete my urgent project. So when I attended the first Ho'oponopono workshop by Dr. Hewlin, he praised my book Attractor the Factor. He told me that as I clean myself, my book vibration will raise and everyone feel it when they read it. In short, as I improved, my readers would improve. So, what about the books that are already sold out there? I asked. My book had been a bestseller and gone through numerous editions, was coming out in paperback. I worried about all the people who already had the copies of my book. Those books are not out there, he explained, once again blowing my mind with the mystic wisdom. They are still in you. In short, there is no out there. It would take a whole book to explain this advanced technique in depth it deserves, which is why I am writing this one. Dr. Hewlin's consent suffice it to say that whenever you improve anything in your life, from finances to relationship, there is only one place to look, that is inside. Like आप कभी भी कुछ भी improve करना चाहते हो अपनी लाइफ में, like उन्होंने बताया कि अगर तुम अपने आप को क्लीन करते जाओगे तो तुम्हारी बुक्स हैं, उनकी बुक थी बेस्ट टाइम सेलर है, ऑलरेडी भी है, आप चेक कर सकते हो, अट्रैक्टर द फैक्टर। तो वो बोल रहे थे कि अगर तुम ये क्लीन करते जाओगे तो तुम्हारी बुक जो तुम्हारी वाइब्रेशन रेज होंगी, तुम्हारी बुक की वाइब्रेशन रेज होंगी, और क्या कहते हैं जो पढ़ रहे होंगे लोग उनकी बुक की नहीं, उनकी वाइब्रेशन रेज होंगी। सो इसमें मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आप लोगों को और पता चले, मतलब कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, राइट। जब उन्होंने बुक लिखी थी, क्योंकि बुक तो हम ऐसे किसी को कॉपी करके नहीं लिखते, राइट, वो हमारे अपने थॉट्स होते हैं, हमारी अपनी लर्निंग होती है, हमारा अपना विजडम होता है, और वो अपना विजडम अपनी लर्निंग कहाँ से, फ्रॉम इनसाइड, राइट। और डॉक्टर जो विटैल थे, होपोनोपोनो करके किसको क्लीन कर रहे थे, इनसाइड को क्लीन कर रहे थे। और जो सामने पर्सन बुक रीड कर रहा है वो क्या कर रहा है, ग्रैस्प कर रहा है, उसको कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, इनसाइड अप्लाई कर रहा है। सो इसीलिए जैसे जैसे वो अपने ऊपर वर्क करते जाएंगे, उनके क्लाइंट्स अपने आप चेंज होते जाएंगे। द सेम थिंग हैपन विद मी ऑल्सो, लाइक एवरी टाइम आई हील माई सेल्फ, लाइक समटाइम ऐसे कुछ सिचुएशन होती है या कोई भी मोमेंट होती है कि आई फील लाइक कि दिस इज, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, राइट। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो समटाइम नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स की द वे इट इज़, बट एट द एंड ऑफ द डे, राइट, चाहे पूरा दिन जितना मर्जी रेजिस्टेंस में हो, बट एट द एंड आई मेक श्योर कि मैं थिंग्स को एक्सेप्ट करूँ जैसे भी हो वो है। अगर कोई मेरी तरफ से मुझे कोई वर्क करना है, इनर वर्क, राइट, नॉट आउटसाइड वर्क कि मुझे इसको ऐसे इसको चेंज करना चाहिए, वैसे चेंज करना चाहिए, जस्ट इनसाइड वर्क, और जो वर्क मैं जिसको चेंज कर सकती हूँ तो उसको चेंज करती हूँ। देन उसके बाद थिंग्स अपने आप होने लग जाती है, अपने आप सब फेवर में आने लग जाता है, और अपने आप मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स की स्टोरीज दे लाइक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये हो रहा है, मतलब ये सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। सो every time I heal myself, my student heal itself. So this is my affirmation. So in short, there is no out there. Not everyone at the event grasped what Dr. Hewlin was talking about. Near the end of final day, they started bombarding him with questions, all from logical side of the mind, such as how can my cleaning affect another person? Where is free will in all of this? And why are so many terrorists attacked on us? Dr. Hewlin was quite. सो मतलब द थिंग इज़ कि बहुत लोगों को ये आइडिया ऐसा लगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम किसी पर्सन को, अगर मैं क्लीन हो रही तो सामने पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, फिर दुनिया में इतने पाप क्यों हैं, दुनिया में ये टेररिस्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली वो माइंड यूज़ करने लग गया, माइंड के थ्रू उनका माइंड क्वेश्चन पूछने लग गया कि अगर ये सब है तो, अगर ये प्रेयर है तो सब कुछ वैसा होना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि पहली बात तो ये कि हर कोई अप्लाई नहीं कर रहा इसको, और सेकंड थिंग इज़ कि पीपल आर अप्लाइंग, जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी थोड़ा टाइम के लिए करते हैं, देन उसके बाद इसको लेट गो कर देते हैं। सो डॉक्टर ह्यूलिन वॉज क्वाइट, ही सीम टू लुक right at me and sat in the back of the room. He looked frustrated,
considering that his entire message was about there being no out there, that it's all inside of you. He probably felt that everyone is lack of understanding, reflecting his own lack of understanding. He looked like he was going to sigh. I can only imagine that he was saying within himself that I'm sorry, I love you. So डॉक्टर ह्यूलिन ने उनको कुछ नहीं बोला. जैसे ही वो अपने रूम में चले गए, उन्होंने लाइक ही सीम वेरी फ्रस्ट्रेटेड जब उनको ऐसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए. लाइक ही सेड कि मैं ऑलरेडी क्लियरिफाई कर चुका हूँ, कर दिया है मैंने कि दैट एवरीथिंग इज इन साइड ऑफ अस. वी हैव टू चेंज इन साइड ऑफ अस, नॉट आउटसाइड ऑफ अस. बट द थिंग इज कि हम फिर भी भागते रहते, हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कि नहीं मुझे तो बाहर इस पर्सन को चेंज करना, इस मूवमेंट को चेंज करना, ऐसे करना. और he seemed frustrated, but then he realized कि okay, they are also a part of myself. मतलब उनके students अगर उनको ये ऐसे समझ नहीं आया तो there is something inside of him जो उसको understand नहीं हो रहा. Dr. Hewlin, and then he started chanting Ho'oponopono. So I noticed that many people at the event had Hawaiian names, yet did not look Hawaiian. Mark and I asked them about it. We were told that if you felt the urge, Dr. Hewlin could give you a new name. The idea was identify with the new self on the way to having no self and merging with the divinity at zero. I knew the power of new name. Book. Back in 1979, I became Swami Anand Manjushri, and it was name given to me by my teacher at the time, Bhagwan Shri Rajneesh. At that time in my life, when I was still struggling with my past, contending the poverty and searching for meaning, the name helped me to start fresh. I used the name for 7 years, and it was natural to wonder if Dr. Hewlin would or could give me a new name. When I asked him about this, he said he checks in with the divinity when he feels inspired. He says, but he gets a month or after the first seminar, he wrote to me. राइट उसमें डॉक्टर ह्यूलिन ने मतलब जो वो वेबिनार अटेंड कर रहे थे, सेमिनार अटेंड कर रहे थे, लोगों के नाम बहुत हवाई, मतलब वो हवाई से हैं, तो ऑब्वियसली हवाई नेम्स थे, बट वो लोग हवाई नहीं दिख रहे थे. लाइक हर किसी की लुक्स होती है, हर कंट्री के डिफरेंट लोगों की अलग अलग ब्रीड होती है, राइट. बट वो वैसे दिख नहीं रहे थे. तब उन्होंने बोला कि उनको डॉक्टर ह्यूलिन ने नया नाम दिया है. और नए नाम देने से क्या मतलब रहता है कि हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, न्यू स्टार्टिंग वाला आ जाता है कि ठीक है, दिस इज़ माय न्यू नेम एंड ये बिल्कुल फ्रेश है, इसका कोई पास नहीं, इसका कुछ नहीं है, तो मुझे इसके साथ, इस वाइब्रेशन के साथ मैच करना, दैट्स द ओनली थिंग. एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, जस्ट गिव योर सेल्फ अ न्यू नेम, अ ब्यूटिफुल नेम जिसका कोई मीनिंग हो. और उसके बाद उन्होंने मेल पे उनको रिप्लाई करा जब डॉक्टर जोविटेल ने उनको पूछा कि मेरा नाम क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो. तो डॉक्टर ह्यूलिन ने बोला कि आई विल टेल यू, जब मुझे डिवाइन गाइडेंस आएगी, जब मुझे इंस्पायर्ड लगेगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा. सो आई सॉ अ क्लाउड कम अप in my mind the other day. I began a transformation of itself, churning slowly into soft yellow. It then stretched itself out like a child upon walking into invisibility. From the invisibility, the name of Akua godly surfaced. I received this quotation as a part of email message today. Oh Lord, that lend me a heart depleted with thankfulness. I wish you peace beyond all understanding, peace of I. So I love the name. उनका नेम उनको दिया गया Akua, but I had no idea how to pronounce it. So I wrote and asked for help. Here is what he wrote back. So Dr. Zo, A is sound for the letter A in father. O is the sound for letter is O. K is the sound for letter is kitchen. U is the sound for letter is blue. So piece of it. Then I was able to figure it out and enjoyed my new name. I never used it in public, but I did when writing Dr. Hewlin later. And when I began my blog online, www.zovitel, I would sign off using Akua. Very few people questioned it. I loved it though, because it felt like I was asking divine to clean my blog by using a phrase that meant to me and the parting of the clouds to see God.
So while the weekend training installed I love you in my head, at least temporarily, I wanted more. I wrote and asked Dr. Hewlin if he would come to Texas and talk about Ho'oponopono to small group of friends. And this was my plan, to have more of him to myself. And he would fly to Texas for small talk and stay with me. While he was with me, I would pick his brain about what he knows, including how he healed the entire world of mentally ill criminals. And Dr. Hewlin agreed and wrote the following to me. So उसके बाद उन्होंने अपना खुद का मतलब डॉक्टर ह्यूलिन ने उनको नाम बता दिया और वो अपना नाम वो यूज़ करने लग गए और एक हीलिंग की फॉर्म में ये नाम की, ठीक है, दिस नेम आई एम यूजिंग, मतलब एक क्लीनिंग टूल की तरह कि ये नाम अगर मैं लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली दिस फ्रेज इज गेटिंग क्लीन्ड. सो उन्होंने देन डॉक्टर जोविटेल ने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर ह्यूलिन को यहाँ पे बुलाया जाए, वो जब वो स्मॉल टॉक करेंगे तो वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उनका माइंड रीड कर पाऊँगा, लाइक मुझे और पता चलेगा. सो उन्होंने उनको मेल करा तो उन्होंने इन रिटर्न उनको बोला, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कॉल मी. You did not have to, and you did. I am grateful. I would like to propose to you an interview format for informal visit in Austin in February. Perhaps the backdrop for the interview could be kind of survey of problem-solving approaches that you covered in your book, Adventures Within and Confessions of an Inner World Journalist. I see you being more than interviewer and me more than interviewee in this arrangement. Clarity is so important in conveying information, be in it in whatever art form it takes. For example, there is much fuzziness as to what a problem is, much less its cause. How does one solve the problem when one might be unclear about it? So, where is the problem to be found, to be processed? In the mind? What's that? Or in the body? Or in both? Perhaps it's not in any of these venues. There are even the question of who and what does the problem solving. As you mentioned in the book, it is difficult to keep judgment at bay even as one attempts to problem solves using such method as an option or a forum. Our judgments or belief are real problems. Let's the real problem is stand up for all to see. The informal interview would not be about good or bad, right or wrong methods or concept. It would be the way of teasing out recurrent unclarity. You and I would provide the tremendous service if we cleared the waters only one Eosia. So, of course, each movement carry its own peculiar rhythms and tides. In the end, Shakespeare's play, we will have to wait till the end of the day to see how it all turns, and so will we. Tell me your thoughts about the proposed interview arrangement, and I am not married to it at roots to the end piece. So उन्होंने अपनी इंटरव्यू के बारे में बोला कि ठीक है वी विल डू द इंटरव्यू, और जिसमें हम राइट एंड रॉन्ग के बारे में नहीं पता करेंगे, जिसमें हम ये इंटरव्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ये एक इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन होगा ऑस्ट्रेलिया में, ये सारा कुछ उन्होंने बताया. एंड आई क्विकली अनाउंस अ प्राइवेट डिनर विद डॉक्टर ह्यूलिन एंड माई सेल्फ. आई थॉट 5 or 6 people might show up. Instead, almost 100 people showed interest and 75 people paid for a nice dinner to reserve their spot at the table. Dr. Hewlin surprised me by asking for the list of everyone who would attend the event. He wanted to clean on them, and I was not sure what that meant, but I sent him a list. He wrote back and saying thank you for the list. And it's okay, it's only about cleansing, the chance to get clear of stuff and to be clear with God. So then soul, live thou upon the servant's loss, and let the pine of aggravate they store. By terms divine in selling hours of dross, within be fed without the rich no more. So इन्होंने डिफरेंट मतलब ये बाइबल वाली लैंग्वेज में लिख रखा है, सो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. नीचे इसको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो सीधे डायरेक्ट उधर चलते हैं. सो व्हेन डॉक्टर ह्यूलिन arrived in Austin and I picked him up, he immediately started asking me questions about my life. The book you wrote about your life shows that you did a wide variety of things to find peace. He began, which one really works? I thought about it and said they all had value, but maybe the option process was most useful and reliable. I explained its way to question belief to find out what is real.
So when you question belief, what you are left with. So when you are left with, I repeat, what you are left with, I repeated, you are left with clarity about choice. सो इसमें उन्होंने बताया कि मतलब डॉक्टर ह्यूलन ने उनको पूछा कि मतलब आपने पीस ढूंढने के लिए आपने बहुत कुछ ट्राई करा, आपकी बुक से पता चलता है कि आप यहाँ पे गए इस गुरु के बाद, जैसे हम लोग पीस ढूंढने के लिए, आप अगर आप सोच रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? जस्ट टू फाइंड आउट द पीस इन साइड, राइट? सो वैसे ही उन्होंने बताया। एंड उन्होंने ये बताया कि जब हम बिलीफ को, अपना जो भी बिलीफ है हमारा पास्ट का, आपको मनी को लेकर है, आपके खुद को सेल्फ को लेकर है, जब आप अपने बिलीफ को क्वेश्चन करते हो ना, तो जो पीछे रहता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी रहती है। सो आई वॉज नॉट श्योर वट ही वॉज गेटिंग एट, वाई कैन अ पर्सन बी वेल्दी एंड स्टिल बी एन एस, he suddenly asked me. I was taken by surprise with the question. I wanted to explain that wealth and as are not exclusive. There's nothing written. There's nothing written that only angels are wealthy. Maybe person is clear about money, so he can be wealthy and still be cuss. And but I could not find the words in the moment. I have no idea, I confessed. I did not think you have to change your personality to be wealthy. You have to just have to have belief that accept wealth. Where do those belief come from, he asked. Having been in his training, I knew enough the answer. They are program people pick up from living. He again changed the subject by saying, I am truly a hypnotic writer. I was beginning to entertain the idea of book by me about Ho'oponopono. Are you ready for me to write the book now? I asked. And let's see how we can go, he said. Speaking of that, how are we doing this dinner? I asked. I have always wanted to control the situation to be sure I do well and people get what they want. So I never plan, Dr. ह्यूलिन सेट। मतलब उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, बुक के बारे में उन्होंने बताया, बिलीफ के बारे में बोल रहे थे, उनका आंसर नहीं किया उन्होंने। देन उनको पूछा कि ठीक है, यू आर वेरी गुड राइटर, क्या तुम मेरे लिए होपोनोपोनो की बुक लिखोगे, जो ये बुक उन्होंने सच में लिखी है। सो देन उन्होंने आगे बताया कि ठीक है, मुझे डिनर के लिए आप बता दो क्या क्या होगा। लाइक कुछ लोगों को होता है ना परफेक्शनिस्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, दे ऑल वांटेड टू अरेंज एवरी सिंगल थिंग कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और डॉक्टर ह्यूलिन ने उनको रिप्लाई करा कि आई नेवर प्लान, ही सेड आई ट्रस्ट द डिविनिटी, बट आर यू गोइंग टू स्पीक फर्स्ट और मी और व्हाट, एंड डू यू हैव एनी इंट्रोडक्शन यू वांट मी टू रीड फॉर यू? वी विल सी, ही सेड डोंट प्लान। ही सेड मैं कुछ भी प्लान नहीं करा कि कौन ही बोलेगा, कौन पहले जाएगा, कौन पीछे जाएगा, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। एंड बिलीव मी, जैसे लाइक I am doing sessions from last almost 1.5 year, 1.5 year me, 1 year plus 1 month, right? So ये हो गया 1.1 हो गया। So I am doing the sessions. Believe me, I never plan anything. मैं सीधा डायरेक्ट सेशन में जाती हूँ और like I just surrender to the divine कि it's okay, मतलब it's okay नहीं, divine just allow me, आपको क्या शेयर करना है इस कम्युनिटी के साथ, आपको क्या बोलना है, आई एम जस्ट अलाइंग यू, आई एम जस्ट सिटिंग हेयर, सिंपल एज दैट। एंड जैसे ही मैं ये करती हूँ, बिलीव मी, इतना बेस्ट कंटेंट आता है। स्टिल समटाइम्स आई वॉच माई ओन लेक्चर्स कि मैंने क्या क्या बोला है, राइट? उस टाइम पे एज लाइक टोटली इन सरेंडर मोड, टोटली इन ओपन एंड रिसेप्टिव मोड कि आई एम रिसीविंग एवरी सिंगल थिंग एंड आई एम टेलिंग टू द पीपल। सो बेटर है कि लाइफ को इतना भी ज़्यादा प्लान मत करो, थोड़ा सा अपनी एक डिवाइन के लिए स्पेस रखो कि ठीक है, दिस इज मैं स्पेस डिवाइन के लिए रख रहा हूँ फॉर बेटर थिंग्स, राइट? आपके लिए आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसको रखो, बट हैव सम इंटेंशन कि या तो ये मिले या इससे बेटर मिले, सिंपल एज दैट। तो इससे बेटर मिले मतलब डिवाइन के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया। But are you, then this made me uncomfortable. I like to know what is expected of me. Dr. Hewlin was pushing me into the darkness or maybe to the light. I was not sure at that time. He went on saying something more wise than I knew at that time. What we human are unaware of in our moment to moment existence is constant. And in resistance to life, he began. This resistance keep us in a constant and state of displacement from our self-identity and from freedom, inspiration, and above all the divine creator itself. So simply put, we are displaced people
and wandering aimlessly to desert of our mind, we are unable to heed the precept of Jesus Christ and resist not. We are not aware of another precept, peace begins with me. So the thing is कि दो important things हैं हमारी life में. Everything is available right now in this moment, but the thing is कि we are always on resistance mode, कि हमें पहले हमारा माइंड कोई स्टोरी क्रिएट करेगा, फिर हम उसको रेजिस्टेंस में करने लग जाएंगे. जब हम तो फ्यूचर को रेजिस्ट कर रहे हैं, पर कर कहाँ पे रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं. तो लाइफ कहाँ पे खराब हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट में खराब हो रही है. अगर प्रेजेंट मोमेंट में रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस है, तो व्हाट यू विल अट्रैक्ट इन द फ्यूचर, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इतने भंडार आ जाएंगे रेजिस्टेंस के. सो इसीलिए try to accept the moment as it is. Like I have manifested lots of things, I have healed my lots of things by just accepting things as it is, nothing else. कोई मैंने वो स्क्रिप्टिंग नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, जस्ट एक्सेप्टेड द थिंग कि ओके आई हैव नो कंट्रोल्स एंड आई डोंट वांट टू कंट्रोल एज वेल, कि मैं लोगों को कंट्रोल करूँ या सिचुएशंस को कंट्रोल करूँ. आई जस्ट एक्सेप्टेड एवरी सिंगल थिंग एज इट इज़. और जब हम उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते तो हमारे अंदर एक पीस की वाइब्रेशन आ जाती है, हमारे अंदर एक प्रेजेंस की वाइब्रेशन आ जाती है. एंड प्रेजेंस ही सब कुछ चेंज करती है वन पर्सन की लाइफ में. प्रेजेंस ही लाइट क्रिएट करती है. और जो सामने वाले पर्सन्स हैं या कोई भी सिचुएशन है, जब हम उसके ऊपर प्रेजेंस की लाइट डालते हैं तो वो सिचुएशन भी चेंज होने लग जाती है. सो इसीलिए ऑलवेज क्या कहते हैं, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पीस बिगिन्स विद यू. आप पीस को बाहर से नहीं ढूंढ सकते. अगर आप अंदर से खुद पीसफुल रहोगे तो आप लोगों को चेंज कर सकते हो, फैमिली को चेंज कर सकते हो. बट अगर आप सोचो कि ठीक है मैं तो ऐसे बाहर पीस ढूंढते हैं, तो नो, यू कैन नॉट फाइंड पीस आउटसाइड. ये जीसस क्राइस्ट ने बोल रखा है. सो रेजिस्टेंट कीप अस इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंग्जाइटी एंड स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इमटीरियल impoverishment, he added. Unlike Shakespeare, we are unaware that we are in constant state of resistance instead of flow. So for each bit of consciousness, we experience at least 1 million bit unconsciously, and one bit is useless for our salvation. This was going to be fascinating evening. He asked to see the room where we would be holding the dinner. It was a huge ballroom on the top floor of the downtown of Austin, Texas hotel. So the manager was polite and let us into the room. Dr. Hewlin asked if he could be alone in it. She agreed and left. What do you notice? He asked me. He looked around and said, the carpet needs to be clean. What impressions do you get? He asked. There is no right or wrong, but what you get may not be what I get. So I allow myself to relax and focus on the moment. Suddenly I senses a lot of traffic, a lot of weirdness, a lot of darkness. I was not sure what it was, but what it meant. But I voiced it to Dr. Hewlin. The room is tired, and he said, people come in out and never love it. It needs acknowledgement. So ये पूरा जहाँ पे डिनर होना था, डॉक्टर ह्यूलिन ने इनको बोला कि आई वॉन्ट टू बी इन दिस रूम. तो डॉक्टर ह्यूलिन ने डॉक्टर जो से बोला कि व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग इन दिस रूम, मतलब तुम्हें कुछ पता चल रहा है इस रूम का. एंड ही वाज लाइक कि हाँ, दैट कारपेट्स आर परफेक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है, मतलब माइंड के थ्रू. देन ही सिंपली, उसको पता चला कि ऑब्वियसली डॉक्टर ह्यूलिन ये क्वेश्चन पूछा तो देयर इज समथिंग ग्रेट इनसाइड ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट. तो जैसे उन्होंने उस क्वेश्चन के बारे में पूछा तो वो एक प्रेजेंट मोमेंट में आ गई, इस प्रेजेंस में आया. देन ही रियलाइज द ट्रैफिक, द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ रूम और एनीथिंग, राइट. जैसे उसने वो चीज़ ऑब्जर्व करी, देन ही टोल्ड टू द डॉक्टर ह्यूलिन कि द थिंग इज कि आई एम फीलिंग सम एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस, एनर्जेटिक ट्रैफिक, राइट. फिर डॉक्टर ह्यूलिन ने बोला कि एवरीथिंग, डॉक्टर ह्यूलिन के अकॉर्डिंग या ह्यूलिन के अकॉर्डिंग, ये यूनिवर्स के अकॉर्डिंग एवरी सिंगल थिंग इज अलाइव. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बुक है जो कि हमें लग रहा है कि ओके ये तो ऐसे ही चल रही है, इसकी कोई एनर्जी नहीं, इसको, बट द थिंग इज कि दिस बुक इज़ अलाइव, ठीक है. इसके वाइब्रेशनल
क्योंकि वो थिक है, हमें लग रहा है कि, तो इस वजह से हमें लगता है कि नहीं नहीं ये अलाइव नहीं है, टेबल अलाइव नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ह्यूलिन एवरी सिंगल थिंग इज अलाइव एंड एवरी सिंगल थिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। ये हम सभी को पता है, अगर कोई चीज़ मेड ऑफ एनर्जी है तो ऑब्वियसली वो अलाइव तो है ही है। सो जैसे वो मेड ऑफ एनर्जी से है, तो क्या होता है कि हम चीज़ों को यूज़ करते हैं बट हम कभी उनको एक्नॉलेज नहीं करते, इसीलिए बोलते हैं टू पे ग्रेटिट्यूड टू योर होम, टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव, दैट्स द ओनली रीज़न। बिकॉज जब हम उन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं तो वाइब्रेशन चेंज होती है उन चीज़ों की, हमारी तो चेंज होती ही होती है बट उन चीज़ों की भी वाइब्रेशन चेंज होती है, जो सामने वाली चीज़ों की, हमारे रूम की वाइब्रेशन चेंज हो, हमारे डेस्क की वाइब्रेशन चेंज होगी, तो वट वी विल अट्रैक्ट बेटर थिंग्स, बेटर पीपल एंड बेटर रिलेशनशिप एंड बेटर वेल्थ, मतलब जो भी आपकी डिज़ायर है। सो देन उसके बाद आई थॉट दैट वॉज लिटल स्ट्रेंज एंड अ रूम इज़ लाइक अ पर्सन, it has feeling, well whatever. This room says its name is Sheila, and Sheila, that's the room's name. So Sheila wants to know we appreciate her. I was not sure how to respond to that. We need to ask the permission to have our event here, he asked. So I am asking Sheila if it is okay with her, and what is she saying, I asked, and feeling a little foolish asking the question. She's saying it is okay, and well, that's good, I replied, remembering that my deposit on the room was non-refundable. And he went on to explain, I was in the auditorium once and getting ready to do a lecture, and I was talking to the chair, and I asked, is there anybody I have missed? Does anyone have problem that I need to take care of? One of the chairs said, yes, you know, there was a guy sitting on me and today during the previous seminar and who had financial problems, and now I feel like dead. And so I cleaned with that problem and I could just see the chair straighten up, and then I heard, okay, I am ready to handle the next guy. So the thing is कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा डॉक्टर ह्यूलिन थे, वो स्पिरिट से बात करते थे बिकॉज ही वॉज सो क्लीन इन साइड ऑफ हिमसेल्फ, एंड उनका काम ही यही था, राइट, उनका सोल पर्पस ही यही था। और वो चेयर्स एंड ऑल उनसे भी, उनको भी क्लीन करते थे कि हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, इवन की प्लेन्स को भी करते थे वो, बिकॉज बहुत चीज़ों को हम एक्नॉलेज नहीं करते तो इसीलिए हमें डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। तो चेयर के रिगार्डिंग ये चीज़ आपको कुछ लोगों को लगे हाँ यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट इट इज़ ट्रू, लाइक हम अगर चीज़ों से बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उनकी सिंपल है वाइब्रेशन रेज हो जाती है, तो वो हमें अलाउ करती है और फ्लॉरिश होने में। मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगी, इसके आगे नहीं। सो ही इज़ टॉकिंग टू चेयर्स, and somehow I left my mind open to hear more about his unusual process of his. He went on to explain, what I actually try to do is to teach the room. I say the room and everything in it, do you want to learn how to do Ho'oponopono? After all, I am going to leave soon. Would not be it nice if you could do this work for yourself? Some says yes and some says not, and some says I am too tired. And I remember that many ancient cultures regarded everything as alive. In the book Clearing, Jim Pathfinder explains that the places often have stuck energies. It should not be too crazy to imagine rooms and chair having feeling. It was certainly a mind expanding thought. If physics is right, that there is nothing but energy making up what we perceive to be solid, then talking to the rooms and chairs just might be a way to rearrange that energy in some new and clearer form. But chairs and rooms talking back, I was not quite ready for that at the time. Dr. Hewlin looked out the window to downtown skyline, the huge building, the state capitol. The horizontal looked beautiful to me, but not to Dr. Hewlin. And I see headstone, he said. The city is full of dead. I look out the window. I did not see graves or death. I saw a city again. I was learning that Dr. Hewlin used both of his side of the brain in each moment, so he could see structures as metaphors and speak them as he saw them. And not me, though I was not asleep in my shoes with my open eyes. When we stayed in the hotel room, maybe for 30 minutes, as far as I could tell, Dr. Hewlin walked around, cleaning the room, asking for the forgiveness, and
cleaning, cleaning, and cleaning. At one point, he made a phone call. He told the person on the other end where he was, described it, invited her impressions. He seemed to be get confirmation about his own impressions after he hung, and we sat at the table and talk. So my friend says, this room will let us do our dinner here long as we love it, he told me. And how do we love it? Just say I love you to it, he answered. It seemed silly and say I love you to the room, but I did my best. I had previously learned that you don't have to actually feel I love you for it to work. You just have to say it. Say it, and I did. After you say it for a few time, you begin to actually feel it. मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें होपोनोपोनो फील करके करना है, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं आ रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जस्ट चैंट कर रही हूँ दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. उन्होंने पहले भी एग्जाम्पल दी है, एम्प्लॉय वाली एग्जाम्पल, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि उसको आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक उनको अपने जो एम्प्लॉय था, उनको ऐसे लग रहा था कि ही जस्ट वॉन्टेड टू किल हिम, और कि वो उसका क्योंकि काम नहीं कर रहा था, इस फीलिंग ऑफ रेज थी उसके अंदर फीलिंग ऑफ एंगर थी फॉर द एम्प्लॉय, बट स्टिल उसने आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलते रहे विदाउट फीलिंग. बट आफ्टर 3 days उनके अंदर वो चेंजेस आने लगे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशन चेंज होने लगी, तो वो उनके अंदर एक फीलिंग आने लगी, और जैसे वो फीलिंग के साथ बोलने लगे तब वो मैनिफेस्ट हो गया. बट दैट डजंट मीन कि आपको पहले स्टेप में ही फीलिंग ही चाहिए. सो स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो एज इट इज. सो नेक्स्ट है, सो कहाँ पे था? What we individually hold, memories or inspiration, have an immediate and absolute impact on everything from humanity to the mineral, vegetables, animal kingdoms, he said. When a memory is converted to zero by the divinity in one subconscious mind, it is converted to the zero of all subconscious mind and in all of them. He paused before continuing. And so, what happens in your soul, moment to moment, Joseph, happens in all the souls at the same time. How wonderful to realize this. More wonderful, however, is appreciating that you can appeal to the divine creator to cancel these memories to your subconscious mind to zero and replace them to your soul and the soul of all the divinity thoughts, words, deeds, or action. How do you reply to that? All I could think was, I love you. That's the only thing. So, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब हम एक पर्सन अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो प्रोग्रामिंग निकाल देता है, वो डिलीट करता है, तो जितने भी लोग उस वाइब्रेशन में अवेलेबल हैं तो उनके माइंड से भी ये प्रोग्रामिंग डिलीट हो जाती है. इसीलिए बोलते हैं जब हम खुद को हील करते हैं तो सामने वाला पर्सन हील होने लग जाता है. सो इसीलिए कीप हीलिंग योरसेल्फ एंड pray to the divine that I want to heal, I want to forgive myself, I want to forgive the situation, I want to forgive every single thing, and just keep doing ho'oponopono that I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. With this chapter is finished. I hope you all love the session. Yes, do let me know. Yes, thank you, thank you. Yes, if you have any question, do let me know. Otherwise, I'm going to sign it off because I have to go outside for some work. Done. यस, मेरी बोलते बोलते ऐसे एट द एंड पे आके यू ऑल कैन सेंस इवन आई कैन सेंस माई एनर्जी, राइट, जो पहले थी स्टार्टिंग ऑफ सेशन पे और एट द एंड आई जस्ट बिल्कुल चेंज. यस, थैंक यू, थैंक यू.
Yes, it's beautiful chapter. Now understanding, new understanding about Ho'oponopono. Yes, new understanding about Ho'oponopono, and just keep doing the Ho'oponopono. It is very very important. Even अभी सब लोगों को आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो आप मुझे बोलते थे कि ये क्वेश्चंस का आंसर बताओ, ये बताओ, अभी आपको हर चीज का आंसर मिल रहा है, चाहे आपको फीलिंग्स के साथ Ho'oponopono. Just keep doing Ho'oponopono and just pray to the divine to be at zero state, because this is the only state. We have to be at peace with who we have to who we are, and we have to accept every single thing. और जब हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस को ड्रॉप करते हैं, तो लाइफ में चेंजेस आते हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है. दिस इज व्हाट आई कैन से. यस, एनी अल्टरनेटिव? यस, मोरा की प्रेयर आपको रेगुलर आप एक बार कर सकते हो, या 11 टाइम्स करके उसके बाद आप सिंपल आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोल सकते हो. ऐसा नहीं कि उसको बार बार करना, उसको आप 11 टाइम्स करो. एंड मुझे देखकर ब्रेन पीसफुल हो जाता है. ऐसे मैं कहती हूँ, मुझे देखकर पूरे वर्ल्ड का ब्रेन पीसफुल हो जाए. परफेक्ट. यस. सो विथ दिस लेट्स एंड द सेशन. आई थिंक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज मैंने कोई क्वेश्चन के लिए कोई प्लेस छोड़ी नहीं. दी, अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो तो हम उससे एक्नॉलेज कर पा रहे हों, एक्नॉलेज कर पा रहे हो, तो उसके लिए होपोनोपोनो कैसे करें? सिंपल कि डिवाइन, ये जो पैटर्न है जो मेरे अंदर चल रहा है, नाउ आई एक्नॉलेज इट, कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, प्लीज कैन यू क्लियर इट फ्रॉम माई सबकॉन्शियस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. डू दिस, सिंपल एज दैट. आई कैन लिटरली फील द एनर्जी. Thank you so much. Thank you for your appreciation. I'm truly grateful. Even I am feeling that energy, high energy, because before the session, like I was like, क्योंकि मैंने पहले अनाउंस कर रखा था, तो आना तो मुझे था ही था, बट grateful, truly grateful to the divine. आई कनेक्ट अ लॉट विद द होपोनोपोनो, एंड आई होप आप लोग भी ऐसे ही कनेक्ट करो. आप भी जब होपोनोपोनो की बात कर रहे हो, आप भी जब इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो आपके फेस के भी ऐसे चमक जाना चाहिए, और ऐसे ही ऐसे एनर्जी अपग्रेड आना चाहिए. सो आई थिंक, चलो with this let's end the session and watch this session once again. आपको दोबारा रीड करना होगा, बिकॉज इसमें कुछ नए नए टॉपिक थे, और क्या कहते हैं नए नए टॉपिक्स थे, जो आपका माइंड उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसको ऐसे बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ये. तो हर चीज़ अपने माइंड से देखने की कोशिश मत करो. जस्ट अलाउ योर सोल कि ठीक है, क्या है सोल इसमें, अगर मैं इसके इंटरेक्शन में हूँ, तो मेरी सोल क्या सीखना चाहती है, मेरी सोल क्या चाहती है, उसको अलाउ करो. सोल का कोई माइंड नहीं होता. और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंग्स. एंड आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, मतलब आई एम नॉट थिंकिंग, राइट, आई वॉज मेडिटेटिंग विद यू ऑल, और मेरे एकदम से माइंड में आया है कि लेट्स डू अ मेडिटेशन सेशंस, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन सेशंस, वो भी दिन में 3 टाइम फॉर 7 डेज या फॉर 14 डेज, दिन में 3 टाइम या 4 टाइम्स हम मिलेंगे और मेडिटेशन करेंगे एक साथ, और सो दैट विल बिकम मोर पीसफुल एंड ऑल. ऑब्वियसली द एनर्जी एक्सचेंज विल बी देयर, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. 4 टाइम दिन में लॉग इन करना एंड ऑल, बट बिलीव मी, आई जस्ट गॉट द इनसाइट, एंड आई नो इसका ब्यूटीफुल इम्प्लीकेशन होगा. सो यस, मुझे लगता है कि आप किसी अलग दुनिया में रहते हो. आजकल की लाइफ में इतनी पीस एंड इतनी हैप्पीनेस, इतनी पीस, इतनी हैप्पीनेस आपके अंदर होती है. आपको पहले ही बताया है, बाहर कुछ नहीं है. बाहर अगर आप देखोगे, विल बी लाइक ओ माई गॉड, लाइफ बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ये कर रही है. समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट अवर लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज़, एंड जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ से चेंज बिगिन होता है. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी लाइफ में चेंज स्टार्ट नहीं हो सकता. सो yes, done. So thank you so much everyone. Have a great life ahead. Keep doing Ho'oponopono and keep loving yourself and keep transforming the world, because if you clean your subconscious, the subconscious around the world will change itself. So love you all. Bye bye. I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you.